And we're live. Hello, good evening everybody, namaskar and good morning to USA people. Welcome to this special training program of Margie today. She will be telling us about how to close our month successfully, how to advance our rank. So listen carefully, and today is the best day to learn about these things because it will be useful for every month, coming month. And you know Margie, everybody knows Margie, right? She's a powerhouse. She has experience of this industry for 32 years. She knows ins and outs of everything. She has done every month closing more and more, every month more points and points. That's why she's earning millions of dollars in. And if you want to learn, if you want to earn $1 million also, learn from her, right? So we are very fortunate that she has agreed to give us training. So wasting no time, let's welcome Margie Adiprandi to the stage, please. Thank you. Welcome, everybody. Thank you so much, Hardeep. It's wonderful to be with you on this Tuesday morning, your Tuesday evening, to be able to come together and talk about best practices within our business. And since we are just about to close out the month now, we felt as your leadership team that it would be helpful to have a discussion about how to manage your month, not just the last 2 days of your month, but how to manage your whole month so that you're always treating your business like a business. Now, I'm going to pass it to Hardeep. I'm so grateful to have him so that we can do side-by-side training and he can help translate all of my words so that you can understand them better. Hardeep. Thank you, Margie. मैं आप सबको थोड़ा जो मार्जी बोलेंगी कोशिश करूंगा उसको हिंदी में अनुवाद करने की कि जो लोग थोड़ा हिंदी में ज़्यादा समझना चाहते हैं उनको भी हेल्प हो सके। मार्जी का कहना है कि आज मैं बताऊंगी कि कैसे आपको मंथ मैनेज करना चाहिए, ना कि लास्ट के 2 दिन कि उस टाइम क्या करें, अभी तो इतना रह गया वॉल्यूम, इतना भी मेरा वो रैंक चला जाएगा, ये होगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फुल मंथ कैसे उसको करना चाहिए ताकि हमें लास्ट में जाके ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। यस मार्जी। Okay, so I think one of the problems that I see people make quite often is that they don't think with a business mind when they start owning their own business, right? A lot of us grow up with the idea that we need to find a job and work for somebody else, and somebody else tells us what to do and when to do it. And so when people become an entrepreneur for the first time, sometimes it's difficult to discipline ourselves and to know what actions to take because we're used to being told what to do instead of deciding what to do. Hardeep? माजी का कहना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादा लोग वो गलती करते हैं कि वो इस बिजनेस को एज ए एंटरप्रेन्योर नहीं लेते, बिजनेस नहीं लेते, उनको जॉब की तरह ही लगता है क्योंकि उन्होंने बिजनेस कभी किया नहीं होता, बिजनेस माइंड से नहीं सोचते, ऑनरशिप नहीं लेते। वो हमेशा उनकी जिंदगी में कोई ना कोई उनको बताता रहा है कि ऐसे करो, ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, तो इसीलिए वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अगर हमने ये बिजनेस करना है तो हमें बिजनेस माइंडेड बनना पड़ेगा, इसको अपना बिजनेस समझ के पहले दिन से ही सोचना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो फर्स्ट थिंग इज बिकम ए एंटरप्रेन्योर, अपना बिजनेस माइंड जो है उसको स्टार्ट कीजिए। यस मार्जी। Exactly right. Thank you, Hardeep. And so treating this business as a business from the beginning is the thing that is going to be a wealth creator for you. So whether it's just you and you're the only one in your business right now, you still have a business. Whether you have one customer, you have a business. Whether you have one team member or 100 team members, you have a business that you are responsible for, and you need to manage it within a 30-day period of time so that you're getting the best benefit and you're helping to mentor your people. Yes. जी कह रही हैं कि आप बिजनेस आप ही से स्टार्ट होता है, जरूरी नहीं है कि कितने लोग हैं, आप अकेले हैं तो भी बिजनेस माइंड से सोचिए, आपका एक डाउनलाइन है, एक ही रेफरल है तो भी उसके हिसाब से बिजनेस होगा, और 100 हैं
तो भी उसके हिसाब से सोचना है। तो बेस्ट वे कैसे करना है इसको मैनेज करना वो आज बताएंगी, ताकि पूरा महीना मैक्सिमम उसका फायदा उठा सके उस पूरे मंथ का। यस माँ जी। And so I'm going to go to one of the very basic principles of life, not just business, but life in general. That is, begin with the end in mind. So if we are deliberate and we know where we're going, we can chart a course. If we decide we're just going to start, we might meander, and we waste a lot of time and we waste a lot of effort. So you always want to begin with the end in mind. What is your goal? Hardeep. या माँ जी कह रही है कि हम बिजनेस को छोड़े बात में लाइफ का जो मेन प्रिंसिपल है उसके ऊपर बात करती हूँ कि हमारा एंड क्या है, वट एवर इज एट द एंड, उसी हिसाब से हम अपनी लाइफ प्लान करते हैं। इसी हिसाब से अगर हमें डेस्टिनेशन पता हो कहाँ जाना है, किधर से जाना, उसका हम रास्ता प्लान कर सकते हैं कि राइट से जाना, लेफ्ट से जाना, सीधा जाना, घूम के जाना, वो सब हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमने जाना कहाँ है, हमारा गोल क्या है। यस माँ जी। Now, you do not need to, thank you, Hardeep. You do not need to understand every bit of the compensation plan, but listen closely, my friends. There's one thing you need to know. There are two sides of our compensation plan. So there are there are many ways, at least 5 ways that you can get paid within the compensation plan, but you can rank advance on anyone. Hang on, I'll go ahead and I'll mute the lines. Um, hang on, okay. You can move through the ranks on either side of the compensation plan. So the one thing you need to know is, what is your next rank? If you are a team leader, your next rank is senior team leader. If you are a senior consultant, your next rank is team leader. If you're a senior team leader, your next rank is director one. If you haven't advanced on the promoter or the key sales volume part of the plan, your first goal is bronze. Your first goal is bronze. And so you at least need to know one thing, and your upline mentor can help you with this. You need to know what your next rank is and what it's going to take you to get there from a volume standpoint. Hardeep. या जरूरी नहीं है कि आपको शुरू से ही पूरा आखिर तक प्लान पता होना चाहिए। आप अपने रैंक टू रैंक जानते रहिए, जैसे को कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। तो पहला रैंक क्या है आपका, उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि अगर आप प्रोमोटर प्लान में जाते हैं तो यू हैव टू बिकम ए ब्रॉन्ज फर्स्ट। ब्रॉन्ज के बाद क्या चाहिए, उसके कितने पॉइंट चाहिए, उसको जान लीजिए। आपके जो अपलाइन है, जो स्पॉन्सर हैं, वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप बिल्डर प्लान में है तो सीनियर कंसल्टेंट के बाद यू आर गोइंग टू हैव टीम बिल्डर, देन सीनियर टीम बिल्डर, नेक्स्ट मंथ डायरेक्टर। उसी हिसाब से उसको उस टाइम की स्टडी करिए तो आपको ज्यादा इजी रहेगा कि पहले ही अगर आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं तो स्टार्ट करिए, एक एक रैंक करके करते जाइए। यस माजी। So if I were to ask each one of you right now, would you be able to tell me what your goal for March was? How do you want to finish the month? We still have 2 days. How do you want to finish the month? I won't put anybody on the spot, but I want you to ask yourself, what is my goal for March? What is my goal for April? Hardeep. यस मार्जी पूछ रही है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मार्च का गोल क्या था, क्या वो पूरा हुआ, क्या उसके ऊपर आप पूछ, अभी भी 2 दिन बाकी हैं, यू कैन स्टिल मेक इट, बट यू हैव, आई विल नॉट आस्क एनीबॉडी, बट यू आस्क योरसेल्फ कि क्या वो पूरा हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हम आगे आने वाले टाइम में कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। यस माजी। Okay, so step number one is know your goal, understand the compensation plan well enough so that you know what your next target is and what the volume is that will be required for that. So we now have two more days in the month. Let me suggest this.
What is your goal? Because we're going to finish this month strong. I'm going to go through a few more steps, but what is your goal for April? Do you know what your goal is? It's imperative that you know what your goal is and make sure that your upline and the rest of the team knows what your goal is. Speak it out loud. Say to your team, I'm going director one this month, or I'm going senior team leader this month. Announce it out loud. Hardeep. या अभी जो मार्च का गोल है उसके डिस्कस करेंगे कैसे 2 दिन में उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं. बट नाउ यू कैन प्लान फॉर योर अप्रैल फ्रॉम द 1 अप्रैल कि आपका गोल क्या है, डिसाइड कीजिए एंड उसको डिस्कस कीजिए अपने अपलाइन के साथ और अपनी टीम के साथ और वर्बलाइज कीजिए कि आई वांट टू बिकम ए टीम लीडर और आई वांट टू बिकम ए सीनियर कंसल्टेंट. क्या बनना चाहते हैं उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए और उसके उसके ऊपर उसी हिसाब से काम कीजिए. जब आप वर्बलाइज कर लेंगे so you will have a intention, you will have a determination to do that. Yes, Maji. Exactly. So, very important that you know where you want to go. Imagine if somebody was doing like a darts game. Like, do you guys have darts there? Wonder if somebody was doing a game and they didn't know where the bullseye is, right? Like they're throwing darts, but they're throwing them everywhere. What we want to do is go for the target. And the more clarity that you have about your goal, the more power you bring, the more decisive you are, the more that everything around you starts to happen to help you achieve your goal. Hardeep. जैसे एक डार्ट गेम होती है जिसके अंदर आप वो फेंकते हैं, पिन फेंकते हैं और जाके वो डार्ट बोर्ड पे लगता है. आपका टारगेट होता है बुल्स आई कि सीधा उसके सेंटर में जाके लगे. अगर आप टारगेट से लेके नहीं चलेंगे तो इधर उधर फेंकते रहेंगे तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे. तो आपको फोकस लेके चलना है और जब आप फोकस कर लेंगे, टारगेट के ध्यान करना शुरू कर देंगे तो इट विल हैपन. आपके आप आसे पासे से आपको ऐसी मदद मिलेगी कि आप अपना वो टारगेट पूरा कर सकेंगे. यस माजी. Okay, perfect. So everyone has a chance now to decide exactly what your goal is for April. Just the very next rank is your goal. Equally important, and I think this is where some people become a little bit timid, is you need to know what the goal is for every single person on your team. If you don't know what their goal is, how can you help them achieve what they want? It doesn't matter how big or small the goal is, but you achieving your goals is dependent on helping your team achieve their goals. आपका गोल डिपेंड करेगा आपकी टीम के गोल के ऊपर. तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हर मेंबर की क्या गोल है. उनसे डिस्कस कीजिए, उनको उनके गोल उनको सुजेस्ट कीजिए और उनको उनको बताइए कि वो क्या कर सकते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए. जब उनके गोल पूरे होंगे, जब उनके टारगेट पूरे होंगे तो आपका टारगेट अपने आप पूरे होएगा. तो अपनी प्लानिंग के साथ साथ आप अपनी टीम की भी प्लानिंग करनी चाहिए आपको. यस माँ जी. Sorry, I got my grandson right here. Um, so when you're planning your goal, let's say for example that your goal is to become director one. We definitely have some people on this Zoom who that is going to be their goal, if not this month, definitely in April. So if you want to become director one, for example, you need 12,000 points. The most you can take from one leg is 7,000. So what you want to know is, what are the goal of your team? If you want to become a director one and you have someone who wants to become a senior team leader, then you can know that you're almost halfway to your goal. Give me a minute, baby. यस. अगर कोई आप डायरेक्टर 1 बनना चाहता है तो उसके लिए 12,000 पॉइंट्स चाहिए. बट आपको 7,000 पॉइंट ही एक टीम से मिलेंगे. तो यू हैव टू थिंक फॉर द अदर 5,000 आल्सो. उसको कहां से आपको लेना है. तो उसके लिए आपको एक टीम लीडर जरूरी है जो आपको 6,000 पॉइंट दे सके एक लेग में और बाकी के आप 6,000 पॉइंट दूसरी जगह से ले सकें. सो दैट इज वाई आप उसी हिसाब से फोकस करिए कि आपको बैलेंस पॉइंट कहां से आने हैं और मेन लेग में 7,000 पॉइंट तक लेके बाकी के 5,000 पॉइंट यू कैन
कलेक्ट फ्रॉम अदर लेग, दूसरी लेग से भी आप उसको ले सकते हैं. यस मैम. Exactly right. And so what you might do is, okay, so if you have somebody who wants to become a senior team leader, you can say, yeah, good. I got that volume. And then maybe you have 3 or 4 other people who want to become bronze. And then you know, okay, that's another 500, 500, 500, 500. Great. Now I'm getting like 9,000 points. And then you might bring in one other new person and you help them become a senior consultant. And so, as you help other people achieve their goals, big and small, you get your goals achieved. यस, सेम थिंग. पहले वाली उनको थोड़ा डिटेल में उन्होंने बताया है कि अगर एक आपका आदमी ले लेता है कि मैं सीनियर टीम लीडर बनूंगा या टीम लीडर बनता हूं, बाकी के पॉइंट आप अलग अलग लोगों से उनको ब्रॉन्ज का टारगेट देके आप वहां से 500 पॉइंट लेके पूरे कर सकते हैं, और आपका जो है जॉइंट्स दोनों मिलके एक हायर टारगेट आप उसको पूरा कर सकते हैं, हायर रैंक पे आप पहुंच सकते हैं. यस माता. So, this is where it comes to actually managing your business. If you know what someone's goal is, then all month long, you can work with them to achieve it. That helps you achieve your goal. When you're working with them, they stated their goal. Now, let's just be honest. Let's be real with each other. Not everybody who sets a goal is going to achieve it every month. Life happens. Sometimes it takes 2 months for somebody to achieve a goal. So you want to rely on them, but not 100%. Make sure that as you're tallying or adding up your volume, that you have redundancy. Does that make sense, Hardeep? So, या like if I need 2 people to become bronze to help me achieve my goal, then I want to make sure I probably have 4 or 5 people that are saying they want to achieve bronze, because then I've got myself my bases covered. I'll be right back. सी मैजिकली कि अगर आपने कोई गोल अचीव करना है, आपको उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टारगेट चाहिए, तो ये मत बिलीव कीजिए कि आपने 5 लोगों से पूरा हो जाएगा और 5 लोगों को आपने बोल दिया और 5 टारगेट अचीव कर लेंगे. ऐसा होता नहीं है. लोग चाहते हैं करना, लेकिन किसी ना किसी कारण वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकते. तो अगर आपको मानो अगर आपको अगर 2 लोगों से ब्रॉन्ज के पॉइंट चाहिए, तो एटलीस्ट 5 लोगों को टारगेट करिए, उनको बोलिए कि आप ब्रॉन्ज बनो. तब उसमें से आपको श्योरिटी हो जाएगी कि उनमें से कोई ना कोई 2 जरूर वो इतने पॉइंट जब मिलके इतने पॉइंट हो जाएंगे कि आपका टारगेट पूरा हो जाएगा. तो आप अकेले किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट मत कीजिए. अपना जो बेस है वो बढ़ाइए और सोचिए कि उसमें से एवरेज जो है वो आपको आएगा. लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स एवरीवेयर. तो उसी के हिसाब से आपने लेके चलना है, और ये प्लानिंग पहले दिन से ही कर लीजिए. 1 अप्रैल में ही आप अपनी टीम के साथ अपनी जूम मीटिंग करा करो. आपके पास जूम फ्रीक है या फोन पे या कैसे मिलके बना लीजिए प्रोग्राम कि उनका टारगेट इस महीने का क्या है. उसी हिसाब से आप अपने टारगेट के साथ मैच करके उनको वो टारगेट दीजिए, तो आपका काम जो है बन जाएगा. थैंक यू माजी. माजी आपका म्यूट हो गया. यू आर म्यूटेड. अनम्यूट योरसेल्फ. I just said thank you so much, Hardeep. And I'm just like, let's everybody give Hardeep a hand right now. How good is he at this translation thing? Oh, I'm so grateful. I'm so grateful. Okay, so make sure you know what your goal is. Make sure you know what all of your team members' goals are. And then the third principle of managing your month is strive to have 75% of your goal done by the 15th of the month. Hardeep. सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी आपका गोल हो, कोशिश कीजिए कि उसका जो टाइम लिमिट है वो 15 तारीख तक हो जाए. हाफ ऑफ द मंथ, विद इन मिड ऑफ द मंथ आपको वो लेके चलना है कि टारगेट हो जाए. क्योंकि अक्सर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, हायर टारगेट की तरफ जा सकते हैं. लेकिन अगर उस तक टारगेट लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आप उसका 2 4 5 दिन के बाद आपका वो टारगेट पूरा हो जाए. तो अगर आप वो उसको लंबा खींच लेंगे कि लास्ट में हो जाएगा, तो अक्सर आप हो सकता है पिछड़ जाएंगे और थोड़े से पॉइंट पे भी आपका टारगेट रह सकता है. यस मैम. So I think it's common when we were students in school, we always wanted to wait till the last minute, right? And when we had a test, we knew about it for 2 weeks, but we didn't start studying until the night before.
this is what I want to encourage you not to do. I want to encourage you to plan ahead and load up the activity in the front part of the month so you're not scrambling at the end to reach your goal. ये हमारी नेचर है, हम ह्यूमन नेचर है कि हम पढ़ाई जो पढ़ते थे तब भी हम लास्ट मंथ में या मिनट्स में जाके पढ़ाई करते थे और एग्जाम से एक दिन पहले पूरी रात रात लगाते थे पढ़ने के लिए, और ह्यूमन नेचर है। लेकिन उसको इस बिजनेस के साथ मत कंपेयर करिए। आप इस बिजनेस में आप शुरू से प्लान कीजिए, क्योंकि वो चीजें यहाँ पे चलेंगी नहीं और फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी आपको। तो प्लान अकॉर्डिंगली इन एडवांस। Exactly. And this next step might feel counterintuitive, but it actually is the most important step. Once you set your goal, do not let your foot off of the gas until the first or second of the following month. As you know, with Modere, they work with us by allowing us the first 2 days in the new month to make sure we got our volume and our ranks and that everyone achieved what they want to. And so you want to keep your foot on the gas, pushing and going for it, until the new month starts. ओके, तो माँ जी कह रही है शुरू से ही एक्सीलेटर दबा के रखिए, अपना स्पीड को तेज रखिए, लास्ट डे तक मत छोड़िए। लेकिन कंपनी के पास एक आध दिन का टाइम होता है आपके टारगेट पूरे करें। अगर आपका कुछ रह गया है तो दे हैव सम ग्रेस पीरियड, आप उनको रिक्वेस्ट करके वो पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं। जो पहली तारीख को भी होते हैं उनको लास्ट मंथ में आप डलवा सकते हैं अगर आपके कुछ पॉइंट रह जाते हैं। ऐसा एक कोई प्रोविजन है, वो उसका डिटेल में हम बाद में जानेंगे। ये पहली बार मेरे को पता चला ये भी। यस मार्जी। Okay, so amateurs in the business will, when they get into about the last week of the month, they look at their numbers and they say, I'm not going to make it. And so they start taking their foot off the gas. I'll do it next month, they say. This is the wrong thinking. I promise you that your decisions are intentions. When you have a strong intention and you send it out to the universe, if you don't quit, it will happen. So you have to stay focused right through the end of the month. Don't start easing off the gas on the 25th of the month. Yes. Party. समटाइम्स अगर आप शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, जब लास्ट के कुछ दिन बचते हैं तो आपको लगता है कि ये टारगेट नहीं, बहुत लोग जो अमेचर हैं, जो प्रोफेशनल नहीं है, वो सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये अब नेक्स्ट मंथ करेंगे, तो इसी से आपका टाइम निकलता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी आपका मूड बन जाए उसी टाइम उसको आप टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और जब आपने इरादा बना लिया तो जो कुदरत भी, जो नेचर है, वो भी आपकी हेल्प करती है वो सारे टारगेट पूरा करने में। तो बट इरादा बन लिया तो उसको करना चाहिए, जोर अपना पूरा लगा देना चाहिए कि नहीं जो भी होगा अच्छा होगा, मैं कर पाऊंगा। यस माँ जी। So we have a phrase that we use in the, I'm going to mute you for just 1 sec and then I'll come back. We have a phrase that we use in the US that instead of backing off at the end of the month, you double down. Where that phrase comes from is if somebody is betting, like in Las Vegas, if they're betting and they can double their bet. So I want you to employ this concept as the end of the month comes. Don't think about backing off, think about doubling down. So this is a phrase that we're going to use in our years of working together. I'll say, okay guys, it's time to double down. या मार्जी अपनी अमेरिकन किसी गेम के बारे में बता रही हैं कि वहां पे जब लास्ट राउंड आता है तो उसको डबल करते हैं, अपनी एफर्ट को डबल यू कैन से बेटिंग करते हैं, या कुछ भी करते हैं उसको डबल करते हैं ताकि उसका फायदा हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, अगर दिन कम रह गए हैं तो यू डबल द बैटिंग डबल करो, आप डबल एफर्ट लगाओ एंड देन यू कैन अचीव द टारगेट। I have literally
thousands of stories. I'm going to share one story with you. I have literally thousands of stories that I call 11th hour miracles. What I mean by that is just as the clock is ticking toward midnight, when it's still 11 o'clock and you're still going, relentless, you won't give up, you're going for your goal. That's when the miracles happen. 11th hour miracles, because you don't give up on your goal. You're doubling down, and miracles happen. Explain that, Hardeep, and then I'll tell a quick story. या मार्जी कहती मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज हैं जहाँ पे लास्ट मिनट पे या लास्ट आवर पे मिरेकल्स होते हैं क्योंकि 11 बजे, लेट्स से 12 बजे क्लोजिंग है तो 11 बजे तक आपके पॉइंट पूरे नहीं हो पा रहे हैं और आप अगर छोड़ देते हैं एफर्ट तो वहीं रह जाएंगे, लेकिन आप अपना एफर्ट जारी रखते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं एंड यू आर बैटिंग डबल द स्ट्रेंथ, जो भी उनका मतलब है कहने का। तो समटाइम्स इट हैपन्स, कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा, वो 100 200 400 पॉइंट का आपका लगा देगा, आपके लिए ऑर्डर लग जाएगा। तो अभी मार्जी को एक अच्छी स्टोरी आपको उसके बारे में बताएंगी। यस मार्जी। So years ago within this company, there was a rank before we became Modere. There was a rank called Crown Diamond. It was the very top rank. No one had ever achieved this rank. I decided that I was going to go for it. And I gathered my team members around me and I said, "Who wants to do this with me?" And several people raised their hands. And we were going to do something that had never happened in the history of the company. Hardeep. या मार्जी कहती इससे पहले कंपनी कोई होते थे, उसमें रैंक क्राउन डायमंड का एक रैंक होता था जो किसी ने अचीव नहीं किया था। तो मार्जी डिसाइडेड कि मैं ये रैंक अचीव करूंगी। इसने सबके साथ डिस्कस किया और सबने बोला कि हम ये रैंक अचीव करेंगे 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 आपके साथ। तो क्या हुआ वो आगे बताएंगी। यस मार्जी। So, to compare it to our current compensation plan, it required the essence of having 9 elite 3s that each had 9 senior team leaders. So 9 elites with 81 senior team leaders on their front line. That's what that rank was requiring. It was demanding. It was huge. दैट टाइम इट वाज जो क्राउन डायमंड का या क्राउन मास्टर का जो भी रैंक था, उसके लिए 9 एलीट चाहिए थे और 9 के 9 टीम लीडर, 81 टीम लीडर चाहिए थे, तब जाके वो टारगेट पूरा होता। ये बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन उन्होंने कैसे किया वो बताएंगी। यस मैम। It became a miraculous team effort. One by one, through October, November, each of these sweet team members of mine were working hard to achieve their goals. And it was the last day of December. We had one more woman who was still not quite there, Hardeep. या शायद 3 महीने का टारगेट था इनका। अक्टूबर में, नवंबर में बहुत लोगों ने कोशिश करके अपने पॉइंट कर रहे थे और दिसंबर का लास्ट आ गया, लेकिन एक लेडी है जो अपना वो टारगेट पे पूरा नहीं कर पा रही थी, वो उसके लिए अभी रुका हुआ था। लास्ट डेज ऑफ दिसंबर थे। तो क्या हुआ अभी मार्जी बताएंगी। यस So in we held together and she kept trying and trying. And at 10 o'clock that night, somebody that she had met at a trade show 4 years before called her and said, "I'm ready to start." He placed an order that got her to her rank and we celebrated. वाह। मार्जी बोलिए कि 10 बजे रात को उनके पूरे नहीं हो रहे थे पॉइंट, कुछ पॉइंट कम हो गए थे। शी वाज वेरी डिजेक्टेड, लेकिन उनको एक लेडी का फोन आ गया जो 4 साल पहले किसी ट्रेड फेयर में मिली थी और उनको उसने जस्ट फोन किया कि मेरे को ये बिजनेस करना है, आई वांट टू स्टार्ट राइट नाउ, और उसने ऑर्डर लगाया और उनके पॉइंट पूरे हो गए एंड दे सेलिब्रेटेड फॉर दैट। सो मिरेकल्स हैपन, राइट। And exactly, miracles happen when you won't give up. Miracles will happen. Imagine if she had said,
on that last day, well, I can't do it. It's not going to happen. Sorry, guys. But she didn't. And we didn't. We kept going. And a miracle, something completely outside of our control happened. And Hardeep, I'd like you to share that in the prior years, at the big gala event, maybe I had one or two new diamonds. This year, I watched 23 diamonds, my diamonds, cross the stage, and I became the world's first crown diamond. वाह! नाजी कहती इससे पहले मेरे पास 1 या 2 या 3 डायमंड थे, लेकिन नाउ इस फीट के बाद ये जब टारगेट पूरा किया, तो इनके साथ कितने डायमंड्स थे कि यू कैन वेल इमेजिन व्हेन शी वॉक्ड एज ए क्राउन डायमंड, उनके साथ कितने सारे डायमंड हो गए थे, बिकॉज उन्होंने इरादा कर लिया था कि मैंने ये टारगेट पूरा करना है। तो नेचर ने हेल्प करी, कुदरत ने हेल्प करी उनको, उनको कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिलते गए कि उनके सबके नीचे डायमंड्स के टारगेट पूरे हुए और इनका क्राउन डायमंड का टारगेट पूरा हुआ। वेरी गुड, वेरी नाइस। Thank you. Thank you. And so the last step is to take advantage of the promotions that the corporate team is offering right now. We have 2 more days that you Yeah. could help. You can become bronze. You can help someone on your team become bronze. These products are on special. Take advantage of the promotions to create an 11th hour miracle for yourself. और लास्ट में कहती है कि जो ऑफर्स आती हैं कंपनी की, इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि एक लोगों को अर्जेंसी दिखाने के लिए क्यों वो आज ही खरीदें, क्यों अभी नहीं, क्यों नेक्स्ट मंथ नहीं, क्योंकि अभी ऑफर है, दे आर गेटिंग डिस्काउंट, और डिस्काउंट में उनको काफी फायदा होगा, तो अभी खरीदो। इससे खरीदने के क्या अर्जेंसी आती है, और उसका आप ऑफर को अगर प्रमोट करते हैं तो यू विल गेट मेनी पीपल हु वांट डिस्काउंट, दे विल बी हैप्पी कि उनको पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट मिल रहा है और कम पैसे दे रहे हैं, तो आपके पॉइंट्स भी पूरे हो जाते हैं। तो ऑलवेज प्रमोट द ऑफर ऑफ द कंपनी, उसकी ऑफर को प्रमोट करिए और उसका आपको बहुत फायदा होगा। यस मैम। So you're going to keep your foot on the gas, keep your foot on the gas pedal all of the way through the end of the month. And then starting at the beginning of April, I want to know your goal. I want to know your goal. And I want you to know the goal of every single person on the team. How can we hit a target if we don't know what it is? We have to know what our target is, right? We have to know what our target is. Focus. So I want to know your goal. I want you to know your goal. I want you to know your team's goals. Hardeep. या माजी चाहती हैं कि इस महीने 1 तारीख को ही मैम शी वांट्स के सभी का, जिसका भी जो भी गोल है, शी वांट टू नो। और पहले आप अपना गोल बनाइए और मार्जी को बताइए, अपने अपलाइन के थ्रू बताइए, या ग्रुप में डालिए। मार्जी वांट्स कि आप सबके गोल मेरे सामने आए, तो आपको भी पता होगा कि हमने क्या करना है, और शी विल आल्सो गाइड अस, वो भी हमें गाइड करेगी कि हम अपने कैसे गोल अचीव कर सकते हैं। सीनियर टू जूनियर, जूनियर टू सीनियर, व्हाटएवर इट इज, एवरीबॉडी शुड अकॉर्डिंग टू हिज और हर कैपेसिटी, जो क्या चाहते हैं उसी हिसाब से अपने जो जो अचीवेबल गोल हैं वो बनाइए। अपने अपलाइन के साथ बैठ के वो आपको गाइड करेंगे। देन वी विल गिव ए लिस्ट टू मार्जी, कि हम मार्जी को लिस्ट देंगे कि ये हमारी टीम के गोल हैं, और इस टीम के गोल के हिसाब से हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू गो। सो उसी से आपका टारगेट पूरे करवाएंगी मार्जी। यस मार्जी। That's exactly right, Hardeep. Thank you so much for that. So we will come together and we will achieve these goals together. Just to revisit, I'm listening to a book right now on Audible, a book that has a very powerful message. Um, it's called Chase the Lion, and it tells the story of most people, if they see a lion, they're going to turn around and run away. But if you see a lion, you want to chase after the lion. And so know what your goal is, know what your team's goals are, achieve 75% of it by the 15th of the month. I'll let you say that much, Hardeep, so it doesn't get to be too many points. Yeah.
मार्जी एक बुक पढ़ नहीं रही हैं, सुन रही हैं। आजकल जमाना हो गया कि आप किताबें बोलती भी हैं, ऑडिबल बुक है। तो वो एक उसका नाम है चेज द लॉयन। तो उसमें काफी कुछ इनको अजीब दिख रहा है कि अगर लॉयन आपको दिखता है तो आप भागते हैं, लॉयन चेज आपको करता है। लेकिन अगर आप लॉयन को चेज करेंगे तो क्या हो सकता है, कैसे आप उसको मतलब उसको भगा सकते हैं। इसी तरह आपके टारगेट को अगर चेज करेंगे 15 तारीख तक तो यू कैन कैच द लॉयन वाली बात है। डिटेल उसकी बाद में बताएंगी। यस मार्जी। In this book, he says you need a God size goal. And the way you know if you have a God size goal is if you look at the goal and you know that you don't have the resources or the skill to achieve it by yourself. You're going to need some divine help. That's when you know your goal is big enough. या आप ऐसा गोल जरूर तय कीजिए, बड़े से बड़ा गोल करिए अपनी तरफ से कि जो आप लगता है कि आप इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे, या जब तक मेरे को कोई डिवाइन हेल्प नहीं मिलेगी, कोई गॉड की तरफ से मेरे को हेल्प नहीं मिलेगी, उसको गॉड्स टारगेट कैरियर होता है। तो आपको डेफिनेटली अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको नेचर से, गॉड से, जिसमें बिलीव करते हैं उसे हेल्प मिले, तो पहले वो टारगेट तो सेट कीजिए, वो डिमांड तो कीजिए, उसको उसका ध्यान तो लगाइए। डेफिनेटली यू विल गेट हेल्प और आपका टारगेट वो अचीव होगा। यस माजी। Okay, so we know steps 1, 2, and 3. What's your goal? What are your team members' goals? Strive to have your goal, 75% of your goal achieved by the 15th. Number 4, don't take your foot off the gas until the month is over. Number 5, take advantage of promotions. Hardeep. ये तो ये 5 स्टेप हैं। पहले कि अपने अपना गोल बनाइए, अपनी टीम का गोल जानिए और उसको पूरा करने के लिए 75% काम आपका 15 तारीख तक हो जाना चाहिए। और अपना एक्सीलेटर जो पेडल है उसको कम नहीं होने देना, लास्ट मिनट तक, लास्ट दिन तक उसको स्पीड को उसी हिसाब से लोगों से बात करनी और करना है। और लास्ट में जो ऑफर आती है कंपनी की, हर महीने नई नई ऑफर आती है, उसका फायदा उठाना है, वो अपनी एडवांटेज के लिए लेना है। Yes, Marty. So I'm going to have my assistant type these 5 steps up in a really beautiful image. I'll have her post it in all of the chats as she posts the replay. And then finish this month strong. It's time to double down. When we come together at the beginning of April, we're going to treat our business like a business better and more than we ever have. And we're going to do it together, Hardeep. Yes. माजी कह रही है कि जो भी आज डिस्कस हुआ है, ये जो 4-5 पॉइंट हैं, वो अपनी असिस्टेंट को बोलेंगी कि टाइप करके वो भी हमें इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग के साथ भेजेंगी, जो हम सबको फॉरवर्ड करेंगे, सो दैट यू कैन अगेन रिमेंबर दीज थिंग्स। उनको बार बार देख के, सुन के, और हम जो जो 2 दिन रहते हैं उस पर डबल ट्रिपल जो भी एफर्ट लगा दीजिए और अप्रैल से नए गोल स्टार्ट कीजिए। यस माजी। Okay, my friends. Well, thank you so much for being with us today. We'll be back together tomorrow with an opportunity presentation. Don't forget the promotions that we have this month. And as you're pushing toward those rank advancements, all of that is going to help you get on the trip to Dubai. Hardeep, go ahead and wrap it up, and I'll stop the recording when we're done. थैंक यू वेरी मच सब सुनने के लिए, और अब इसके ऊपर एक्ट करना आपका काम है। और याद रखिए कि नेक्स्ट मंथ से दुबई का ट्रिप भी है, उसको भी हमने अचीव करना है यार। उसमें कुछ और भी नई चीजें आएंगी, वो हम आपको बताते रहेंगे। और अभी 2 दिन बाकी हैं, जाइए डबल ट्रिपल एफर्ट करके जो भी मिनिमम से मिनिमम जो भी आपका टारगेट नियरेस्ट है उसको अचीव कीजिए। और कल दोबारा 9 बजे हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन की मीटिंग होगी, उसमें जरूर अटेंड कीजिएगा नए लोगों के साथ। बिजनेस प्रेजेंटेशन में हमेशा नए लोगों को लेके आइए ताकि वो जान सके कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में। और ट्रेनिंग्स में फिर उनको भी साथ में बिठाइएगा ताकि ऐसी नई नई चीजें हमें सीखने को मिले। और आज हम यहीं पे आप इसको समाप्त करते हैं। कुछ किसी को कुछ कहना है, बोलना है, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। इफ यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू एनीथिंग about this, you can raise your finger and we will unmute you, then you can talk. Anybody, any leader, anybody who just want to, Please. Rajneesh want to speak, please kindly unmute him. He's unmuted. Yeah. Yes, All right. Rajneesh ji. So Maji, like what problem we face this being the last date, 31st.
So it is a financial year closing for most of the organizations and in most offices. So most people cannot really uh, place their orders. They are saying they will place order on first or second. So can this offer be extended, Yes. discounted offer for the 2 days? Let me find out if the offer can carry forward. Rajneesh, to answer your question, 100% we can still backdate the order. If we get an order on the 1st or the 2nd, we can backdate it into this month. Let me confirm with Puneet and I'll circle back with you and let you know in the chats if we can also. Otherwise, we wouldn't have asked for this. It is only because this was the year-end closing in India, 31st March. Ah, so smart. Yeah. Okay. Let me circle up with Puneet and I'll get back to you with that answer. Great question. I know we can backdate. Let me see if he'll extend the promotion through the 1st and the 2nd. Okay. Yeah. That will be great help. Yes, Great, thank you. great thinking, Rajneesh. Yes. Okay. So anybody else? No. So thank you very much. Should we open? Everybody can open your own line and say, "Together we rise." Yeah. So Because we go with together we saying, rise. we rise again together. Together we rise. Rise. Together All we right. rise. Together we rise. Come on, Moni, do it. Together we rise. Together. Monica, together we Good rise. night. Together we Bye, 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 bye. Thank you so much, Hardeep. Love you all. Bye.